dotted with pine forests and waterfalls, covered by valleys, coffee and paper gardens. Yes, we are talking about the Kashmir of Odisha, Daringbadi. We will be talking about how to reach all transportations and all the restaurants where you can eat, where you can stop by, things to explore, hotels to stay, all the type of hotels, and complete details we will be providing in this video. Beautiful hill station of Odisha is in Kandhamal district, and it is a vast area at a height of 3,000 foot of sea level, and it is an ideal place for summer resort for the people, and that's the reason because of its pleasant weather it is called as Kashmir of Odisha as well. Good morning दोस्तों, say good morning. So दोस्तों आज हम जा रहे हैं इट्स अ इंटरेस्टिंग प्लेस, लोग इसको कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर ऑफ उड़ीसा ऑल्सो, और जगह काफ़ी सुंदर है। बरहमपुर से ये 120 अराउंड है। रास्ता बहुत ही सीनिक है। रास्ते में आपको वाटरफॉल्स, बहुत सारे सीनिक जगह मिल जाएंगे, पूरा ग्रीनरी से भरा है। एंड इट टेक्स 3 आवर्स और प्लांटेशन है, ब्लैक पेपर्स हैं, करेक्ट। और जगह तो बहुत खूबसूरत है। तो आज हम एक्सप्लोर भी करेंगे। तो अभी निकल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है अराउंड मॉर्निंग 8 o'clock, और 3 आवर्स तो 11 आवर्स तक हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। As we're starting, let's talk about the transportation part. So, the nearest railway station to Daringbadi is Berhampur, which is at around 125 kilometers. और अगर next railway station, if you are talking about from west side of Odisha, it is Balangir also, वहाँ से आप आ सकते हैं, and वहाँ से आपको 152 kilometers around पड़ेगा. And these both cities are quite famous, so you will get ample amount of buses, cabs, from the city. So after you get down from the train, there won't be any hassle for you. Now, as we are talking, we'll stop by somewhere to have breakfast. आगे कहीं रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। So we are in अंकुशपुर now, जहाँ पे मेरा कॉलेज था, अभी भी है। काफी सारी मेमोरीज हैं। हाँ, तो अभी हम उस जगह पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं कॉलेज डेज में आती थी कभी कभार। So this is a quite old breakfast and tiffin center here in Ankushpur. यहाँ पे काफी सारे colleges भी हैं, जैसे SMIT I was talking about, and yeah, they have a Ayurvedic college as well nearby. Other than that, there is a famous ISKCON temple as well here. तो यहाँ पे आपको कई तरह के ब्रेकफास्ट और स्वीट्स मिल जाएंगे, एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल प्राइस, लोकल स्वीट्स एज वेल एज स्वीट्स दैट यू गेट इन आउटसाइड उड़ीसा एज वेल। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया जो फेमस है बरहमपुर में, पूरी उपमा एंड वड़ा, बहुत ही टेस्टी था। अलॉन्ग विद दैट दे हैड गिवन अस चटनी एंड अ करी, मटर आलू का सब्जी जो होता है, इट वाज हॉट एंड वेरी टेस्टी। सो वी हैड अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट हियर, एंड प्राइस वाज अराउंड 1 प्लेट का लेते हैं 20 rupees, 20 to 30 rupees exactly, I don't remember. Anyways, it is very reasonable and very delicious, so you can do a takeaway as well. So we had a very good breakfast. Yes. और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। Correct. Because it used to be the मतलब ब्रेकफास्ट पॉइंट, या फिर बीच में हमें स्नैक्स खाना होता था, तो Correct. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पे आके खाती थी। Right. और उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स वगैरह नहीं रहता था, Right. छोटे वो रेस्टोरेंट्स रहते थे। Right. यू कैन नॉट इवन से प्रॉपर रेस्टोरेंट, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट और स्नैक्स, जैसे आलू बोंडा, और यहाँ का जैसे मतलब फेमस डिशेस जो हैं आपके समोसा, वड़ा, समोसा, और सबसे ज़्यादा फेमस पूरी उपमा यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट होता है। Right. जैसे कि कटक साइड दही बड़ा आलू, तो बरहमपुर का वो ऑथेंटिक वाला होता है। तो आप अगर बरहमपुर या फिर बरहमपुर के आसपास आते तो यू मस्ट ट्राई, क्योंकि उसमें ना 3 तरह का मतलब सब्जी 2 तरह का मिलेगा, एक तो उपनी और वो आलू की सब्जी भी थोड़ा सा डालते हैं, चटनी 2-3 वेराइटी के मिलते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। और एक चीज़ है कि ये जो होटल या रेस्टोरेंट टिफिन सेंटर जो भी कह लें, ये काफ़ी पुराना है, 1985 से है। हम अभी उनसे बात कर रहे थे कि कब से ये चल रहा है, कब से ओपन किया है, तो इनके पेरेंट्स जो हैं या फोर फादर, उनके टाइम से ये रेस्टोरेंट टिफिन सेंटर चल रहा है, जब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था ये जगह, तब से ये चल रहा है। तो काफ़ी पुराना है। खाना उनका जो डिशेस हैं जो भी टिफ़िन में बना रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, पुराना आपको ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। तो नॉन स्पाइसी है, ऑयली नहीं है, स्पाइसी नहीं है। राइट, अब मज़ा आ जाएगा। और हमने काफ़ी एंजॉय किया ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट वी हैड, और हमने थोड़ा स्वीट्स भी पैक कर लिया है रास्ते में खाने के लिए। राइट, तो हमने अभी के लिए भी, क्योंकि अभी ने थोड़ा सा ही खाया है, उसका टाइम नहीं हुआ था, तो अभी के लिए भी हमने पैक करा लिया है। और हमने वो गुलाब जामुन और जलेबी, और यहाँ का जलेबी ना बहुत पतला से नहीं होता है, मोटा वाला होता है, रहता है, अंदर भी सिरप रहता है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है। 250 ग्राम्स में कुछ 4-5 आगे। राइट, तो अच्छा है। So now we are heading towards Daringbadi. So as we are starting, I'll provide you the link of this restaurant. So they are very traditional, different centers. So they do not have, I don't think they are on Google
map. But I can provide you the link of the college. It is just 300 to 500 meters from the college. So you can use that link, and it is just on the way when you are coming from Berhampur. Now let's talk about the by road if you are coming. So if you want to be amazed by the beauty of nature, so best way is to come by a vehicle, on your own vehicle or cab. Talking about the distance, Bhubaneswar से it is around 247 किलोमीटर, कोलकाता से it is going to be 687 किलोमीटर, वाइजैक से आपको 392 किलोमीटर पड़ेगा, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है वहाँ से आपको पड़ेगा 420 किलोमीटर अराउंड. From all these places you get private cabs as well as private and government buses running. And by air जो नज़दीक एयरपोर्ट आपका रहेगा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट which is in Bhubaneswar. And talking about the bus prices, bus fare from Bhubaneswar to Berhampur, it can start from 300 to 3000 depending on the quality and type of bus service you are using. And from Berhampur to Daringbadi it takes 400 for a bus fare. We are talking on the left side, there is माँ Karanjei temple. So ये टेम्पल अराउंड 30 किलोमीटर्स बरहमपुर से है. यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम माँ करंजई देवी, शिवा जी का टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल है और नारायण टेम्पल ऑल्सो इज देयर. सो यहाँ पे आप पिकनिक करने के लिए नॉर्मल लोग आते हैं. एंट्री टिकट इसका 5 रुपीज़ रहता है. छोटा सा वाटरफॉल है, पॉन्ड भी है, तो काफ़ी सुंदर जगह है. देयर इज अ हिल एज वेल ऑन बिसाइड दैट. सो काफ़ी सुंदर जगह है. आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दिन के लिए अगर आते हैं तो. ऑन द वे यू कैन विजिट दिस टेम्पल एज वेल. Now, as we are moving ahead, let me talk about the hotels in Daringbadi. So there are around 30 hotels. ज़्यादा hotels नहीं है. There are limited hotels, in Daringbadi. Starting price around 700 से लेके max इसका 5000 तक रहता है. And you get good, hotels. So I'll tell you about the list of hotels that are good. First hotel is Hotel Snowview, which is it has a deluxe AC room, standard room as well, and the price starts around. The last price goes to till around 4000. And they have all the basic amenities in terms of bonfire parking, AC, lift, housekeeping is available as well. They have in-house restaurant as well. So all the things are available, and you can book the ticket from Make My Trip or other apps. The second one is Utopia. There is two basically. One is Utopia Resort, वो जो थोड़ा अच्छा amenities के साथ है. It has it is a 3-star property basically. It is a resort. And there is a Utopia Hotel as well, which is a budgeted one. The resort costs you around 5000, wherein the hotel costs you around 1000, 1200, 1500 bucks. So about the Utopia Resort, it has all the amenities that you look for in a good hotel or resort. Inside they have restaurants, dining area, coffee as well. You can order anytime. They have indoor games, bonfire, intercom facilities available, power backup is there, housekeeping always available, and they have public restroom if you have a driver as well, and kids play area, playground वगैरह भी है. They provide transfer pickup, drop transfers as well to the railway stations or towards the Berhampur area. So the view also is very good from the hotel, and the staffs are very good. Food भी बहुत अच्छा है, and you'll have a very good time if you stay in this resort. And eco retreat, like other places, it is there in Daringbadi as well, because eco retreat they are available throughout the Odisha, starting from Pune to any place you choose. So this is you can choose eco retreat as well. There's another one newly built which is called as Ram Prakash Resorts. That also has very good view. They provide breakfast in the package, outdoor pool है, restaurant inside है, रूम सर्विसेज वगैरह देते हैं, फ्री पार्किंग, पेट फ्रेंडली है. सो ऑल इन ऑल दीज आर द लिस्ट ऑफ गुड रेस्टोरेंट्स. आई विल प्रोवाइड यू द अदर लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट विद देयर प्राइसेस and with the links as well. You can choose from basis your requirement. In budgeted hotels, there is Hotel Hilltop, आपको 1100 के करीब पड़ेगा. Hotel Swadhin, that is also 1200 to 1300. These are all on top of the hill itself. And Hotel Swastik एक है, they have a good facility and rating वगैरह भी अच्छा है, तो आप ये देख सकते हैं. 1500 to 1600 प्राइस पड़ेगा. आप डियर सिको होम रिसोर्ट भी जा सकते हैं, काफ़ी बजटेड है, around 15 to 1600, and that is again a 3-star property, so you can choose that as well. So many budgeted options are available. I'll share the links and the details of these hotels. Now let's talk about the things to do or places to visit in Daringbadi. तो पहला है सनसेट व्यू पॉइंट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट वैली. काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत ही सीनिक है. आप यहाँ पे व्यू सनसेट के लिए आ सकते हैं. पिकनिक वगैरह लोग यहाँ पे मनाते हैं जनरली. You can come here, it is near to the town itself, so around 3-4 किलोमीटर पड़ेगा मेन टाउन से. So you can just take a drive and during the evening time and enjoy the sunset view. नेक्स्ट प्लेस जो आप जा सकते हैं, कॉफ़ी गार्डन. इट इज़ लोकेटेड जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन टाउन. यहाँ पे ब्लैक पेपर और कॉफ़ी मेनली प्लांटेशन होता है इसका, और इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 57 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. काफ़ी बड़ा एरिया है. ये जो कॉफ़ी गार्डन है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉफ़ी ट्री गोइंग एरिया इन इंडिया आफ्टर हिमाचल प्रदेश एंड असम. ये जो है ये काफ़ी पुराना है. What makes it beautiful is it is surrounded by dense pine forest and mountains. So
यहाँ पर आप ब्लैक पेपर और कॉफी ट्रीज दोनों एक साथ देख सकते हैं. ब्लैक पेपर इज बेसिकली अ वुडी क्लाइंबर which may reach around height of 10 meters also. So what it does is it climbs up the around the coffee tree. तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो द टाइमिंग इज 8 AM to 6 PM एंड नियरेस्ट बस स्टॉप जो है दारिंगबाड़ी बस स्टॉप है वो वहाँ से 1.5 किलोमीटर रहेगा. बेस्ट टाइम रहेगा विंटर सीजन में इज द बेस्ट टाइम टू विजिट. एंड रेलवे स्टेशन इफ यू टॉकिंग अबाउट अगेन बरहमपुर इज द मेन रेलवे स्टेशन टू रीच. Next place is Butterfly Park Nature Park. It is around 3 kilometer distance from Daringbadi main town. It has a species about 20 to 30 species of butterflies. काफ़ी सुंदर जगह है. यहाँ पे आप आके फोटो खिंचवा सकते हैं. And you can spend some time here, to have a mesmerizing experience of this park. Next जो place है Lovers Point. It is around 13 kilometers from the Daringbadi town. It is a nice place for picnic. फाउंटेन है छोटा सा on the rocks. So it is quite beautiful scenic है. तो यहाँ पे आप जा सकते हैं. रोड थोड़ा खराब रहेगा but you can visit this place. नेक्स्ट जो जगह है एमू फार्म सेंचुरी. दैट इज ऑल्सो अराउंड 13 to 14 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दारिंगबाड़ी टाउन. यहाँ पे भी आप जा सकते हैं. बहुत ही अच्छा जगह है ये. इसका एंट्री टिकट अराउंड 10 रुपीज़ है. ऑल द फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ बेसिक कम्युनिटीज टॉयलेट्स वगैरह भी है. सो यू कैन गो एंड जस्ट विजिट इफ यू आर इन दारिंगबाड़ी. नेक्स्ट जो स्पॉट है राइका फॉरेस्ट एंड मंडासारू इको टूरिज्म सेंटर. काफ़ी सीनिक जगह है कंधमाल का. यू कैन सी वाटरफॉल्स. यहाँ पे कॉटेजेस हैं. यू कैन स्टे एट नाइट. सो बहुत ही अच्छा है. आप यहाँ पे भी जाके घूम सकते हैं. नेक्स्ट जो स्पॉट है मिधुबंदा वाटरफॉल और एल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनबो वाटरफॉल. ये थोड़ा अंदर रहेगा. आपको ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा थोड़ा दूर. देन यू विल सी द फॉल. दिस प्लेस इज नॉट दैट एक्सप्लोर्ड बट इट इज रियली ब्यूटीफुल एंड वंस यू रीच देयर यू गेट द panoramic view of the mountains in front and it is really wonderful experience once you visit there. आप जब एंट्री करेंगे एंट्री फी लेते हैं 60 रुपीज़. आप गाड़ी के साथ जो जाते हैं उसमें कार पार्किंग आप इंक्लूडेड रहता है. उसके बाद आपको 160 to 170 स्टेप्स जाने होंगे. देन यू विल सी द वाटरफॉल. तो उसके ऊपर है पंगाली वाटरफॉल. ये भी काफ़ी सुंदर है. छोटा सा वाटरफॉल है बट ये भी आप विजिट कर सकते हैं. इसके नीचे इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो रेनबो वाटरफॉल और ये अपना जो मैं बोल रहा था मिधुबंदा वाटरफॉल ये दोनों आते हैं. इसके तरफ जब आप जाते हैं ऑन द वे ओनली देयर इज अ पंगाली वैली व्यू पॉइंट एज वेल. तो वहाँ पे आप रुक के फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं. पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं. बहुत ही अच्छा जगह है. ऑन द वे ही पड़ेगा वो. नेक्स्ट जो जगह है हिल व्यू पार्क. काफ़ी सुंदर काफ़ी फेमस जगह है दारिंगबाड़ी का. वन ऑफ द हॉट स्पॉट. यहाँ पे आपका मेन आप सनसेट के लिए जा सकते हैं. ग्रीनरी जो व्यू है दैट इज अमेजिंग. बच्चों के लिए काफ़ी सारा खेलने के लिए है. स्विंग स्लाइड्स वगैरह एंड ओवरऑल ग्रीनरी इतना अच्छा है. यू कैन टेक पिक्चर्स एंड सी द व्यू. जो वैली का व्यू रहता है वहाँ से दैट इज रियली ब्यूटीफुल. Next place you can visit is Belghar Nature Camp. Pretty old heritage place you can visit. Next जो जगह है माँ बारला देवी टेम्पल. काफ़ी पुराना और फेमस मंदिर है. अगर आप रिलीजियस है you like to visit temples this place you can definitely visit if you are coming towards Daringbadi. So all these are the places that you can visit when you are in Daringbadi. Daringbadi is basically famous for its natural beauty. तो यहाँ पे आप जब आते हैं कहीं पे भी रुकते हैं the natural beauty, the mountains, the jungles that take. So ये तो हो गई जगह कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं. थिंग्स टू डू. सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंस दैट यू कैन यूज. फर्स्ट चीज़ है कि दारिंगबाड़ी as soon as you enter the Ghat section the network goes down. So especially Airtel, Vodafone, all these networks you will not get it in the mountain as well as in the Ghat section. So you have to be cognizant about Jio का आता है. So that's a plus point you can use. If you have Jio number then you will get Jio and BSNL. And so when you're booking hotel also you have to be very careful while choosing. You have to ask them whether they have Wi-Fi and because few hotels do not have Wi-Fi as well. So if you need internet, of course everybody needs internet, so you might want to check that. Now talking about the roads, I must say I was quite impressed. Though it is a small narrow road, but it is all concrete and nice road, so you will not have any issue if you are driving to Daringbadi. But yeah, these are narrow roads. You have to be very careful while driving. The ghats are very steep, so carefully drive करना पड़ेगा. If you are a new driver, it might be a little trouble for you. And और एक चीज़ है जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, it is not that developed, so you won't get good hospitals and all. So you have to be careful if you have any people who are sick or they might need hospital in emergency. So you have to be careful in that. और आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं दारिंगबाड़ी में before evening you should travel back to your hotel because it is all you will not have lights, street lights and all. It is all dark. Not much of things happening after night, after evening, as if I say so. As we are talking, you can see the roads are quite good. और ये जो stretch है घाट section वाला ये करीबन आपको 20-25 किलोमीटर तक का रहेगा and that is very scenic
The person who is sitting next to you or other people, than the driver, they can enjoy the view, but drivers can't. But certainly the views are really good. और एक चीज़ है रेस्टोरेंट इन टर्म्स ऑफ खाने में, यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि यू विल गेट गुड रेस्टोरेंट्स और वेरी पॉपुलर रेस्टोरेंट्स. यहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स है, द लोकल कुजिन्स दैट दे मेक, यू हैव टू ईट दैट. एंड बिकॉज इट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, यू वोंट फाइंड ऑल बिग रेस्टोरेंट्स. जैसे आपको बड़े टाउन्स वगैरह में, जैसे बरहमपुर हो गया, भुवनेश्वर में मिलता है, यू वोंट गेट दैट हियर. बट यू वट एवर यू गेट ऑल हेल्दी फूड, मील्स, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी. सो यू हैव टू रेस्ट अश्योर दैट फूड दैट यू विल गेट इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्दी. और इतना बड़ा टाउन भी नहीं है, सो यू कैन एक्सप्लोर इफ यू हैव ट्रैवल बाय योर ओन व्हीकल, यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर टाउन विद इन स्पैन ऑफ 2-3 आवर्स. सो रेस्टोरेंट्स खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड एवरीथिंग इज नियर बाय इन टर्म्स ऑफ फूड. कुछ लेना है, खरीदना है, ऑल दी वट एवर इज अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल नियर बाय, सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट. Now let me talk about the language. Here majority of the people talk in Odisha, जो उड़ीसा का local language है. But people can understand Hindi as well. So if you can talk in Hindi also, you can manage. Now let me talk about what all you need to carry. As we are nearing the Daringbadi hill station, so let me close it with what all you can carry. You can carry emergency kit, because you won't have good hospitals, so better to carry emergency kit. You can carry all your documents, your credit cards. Of course, you won't be able to use. You better carry cash as well. You carry your headphones, your adapters, plugs, and driving license if you're driving. If you're traveling in winter season, of course you carry your jackets. Be cognizant about your how the weather is like, because it is a hill station. During rainy season, it could be very wet. And you do carry extra shoes, because there might be cases where you will be traveling or trekking. So as we have reached Daringbadi, let me close this video. So part 2 में हम कवर करेंगे हम कहाँ घूमते हैं, क्या वगैरह खाते हैं. All that thing we will be covering in the part 2. So stay tuned and thanks for watching and stay connected. Take care. Bye bye.